Hello dear students, today we are having our day 23 video 14 for class 12th. In our previous video we studied about microsporogenesis and today we are going to study about dehiscence of anther, which will give rise to the formation of mature pollen grains. So in our last video what we studied about microsporogenesis. Microsporogenesis is the process which helps in the formation of microspore, a large number of microspores from pollen mother cell. Usually, single meiotic division occurs in single pollen mother cell, which give rise to the formation of 4 microspores at a time. And these 4 microspores are arranged in a cluster of 4 cells, which we call microspore tetrad. These microspore tetrad, over time, they mature and dehydrate and dissociate from each other. As initially they are stick to each other. Now on dehydration they will dissociate from each other and form pollen grains. Usually in 60% of angiosperms the pollen grains are shed in 2 cell stage. Otherwise in rest of the 40% of angiosperms the pollen grains are shed in 3 cell stages. I will discuss it later. First of all, we will study what is the 2 cell stage. The pollen grain, which was having a single nucleus with a cytoplasm, now during the shedding of pollen grains means whenever they are getting released from the anther, they are in 2 cell stage before pollination. So in 2 cell stage, they are having 2 types of cells. One is the vegetative cell and the other one is the generative cell. As you can observe in the diagram given here, the larger one cell is the vegetative cell and the smaller one, the spindle shaped one, is the generative cell. Vegetative cell and generative cell के differences आते हैं board exams में, so you must know about these. So in case of vegetative cells, as it is looking, it is the bigger one. The size is bigger in case of vegetative cell, and the generative cells, these are the small. Means only single cell is present in a single microspore, or what we can say pollen grain, in the mature pollen grain. तो mature pollen grain जब shed होगा वो 2 cell stage में shed होगा, and the 2 cells have 2 kinds of cells. One is the vegetative cell and the other one is the generative cell. Vegetative cell जो है size में आपको बड़ा दिखेगा and the generative cell is smaller in size and it is having spindle shape. If you can observe here, the vegetative cell is having irregular shaped large sized nucleus, whereas the generative cell is having small sized nucleus in it. Next, vegetative cell also bears large amount of abundant cytoplasm. Abundant cytoplasm for what? For the nourishment of these generative cell. This generative cell usually floats inside the cytoplasm of vegetative cell. Means generative cell is a spindle shaped cell which is floating inside the cytoplasm of vegetative cell. So here vegetative cell is having abundant protoplasm, or you can say cytoplasm, to nourish the generative cell. And also generative cell also bears dense protoplasm. Why? Dense protoplasm is present in such cells which will undergo further divisions. So here generative cell nucleus will undergo one mitotic division to form 2 male gametes. That's what we were talking about. In most of the cases, in 60% of angiosperms, what happens? Pollen grains are shed in 2 cell condition, and the 2 cell contains one vegetative cell and the one generative cell. In 40% of angiosperms, it contains 3 cells. Means a single pollen grain on shedding, when it is get released from the pollen grains, this have 3 cell stage, and the 3 cell stage is what? One is the vegetative cell. In those cases, that generative cell nucleus will get divided into 2 male cells mitotically. मेल सेल्स क्या है? वो आपके मेल गैमीट्स हैं प्लांट के, मेल गैमीट्स, और वो भी कौन सा डिवीजन फॉलो करेंगे? माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इनसे रिलेटेड, तो यहाँ फर्स्ट, in case of pollen grains perform 2 mitotic divisions, repeated mitotic divisions. First mitotic divisions give rise to the formation of 2 cell stage,
One is the vegetative cell, the other is the generative cell. Second mitotic division give rise to the formation of two male gametes from generative cell nucleus. Fine. I will repeat this whole again. So in our previous video, we studied about microsporogenesis. What is microsporogenesis? The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiotic division. One meiotic division give rise to the formation of 4 microspores, and these microspores are arranged in the form of 4 cluster of 4 cells called as microspore tetrad. This microspore tetrad on maturation they get dehydrated in absence of water. तभी होगा ना डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट होंगे जिसकी वजह से जो टेट्राड 4 क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स हैं ये डिसोसिएट हो जाएंगे, उससे अलग होंगे और फॉर्म करेंगे द मैच्योर pollen grains. Mature pollen grains आफ्टर डेहिसेंस ऑफ द एंथर. डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए कौन सी 3 लेयर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द थर्ड वन इज द मिडल लेयर. जब वो बर्स्ट होंगी, the all the pollen grains which are present in the microsporangium they will release into the external environment. So in that case, in case of angiosperms, what are angiosperms? Flowering plants. In case of angiosperms, 60% pollen grains will shed in two सेल स्टेज. मतलब 60 जितने भी एंजियोस्पर्म्स आपके अर्थ सरफेस पे रहते हैं है प्रेजेंट, उनके 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में वो pollen grain शेड होते हैं और बाकी के बचे 40% में 3 सेल स्टेज में. जो 2 सेल स्टेज है उसमें जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होते हैं और जो 3 सेल स्टेज है उसमें वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका pollen grain है उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन करता है. पहला माइटोटिक डिवीजन करता है तब बनता है एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल. एंड जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करेगा तो बनेगा 2 मेल गैमीट. मेल गैमीट किससे बनेंगे? जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से. ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पर आगे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से. मान लीजिए किसी भी प्लांट में 70 सीड्स अवेलेबल है हमारे पास, तो उन 70 सीड्स में मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन के लिए या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोटिक डिविजन्स हुए? तो माइटोटिक डिविजन्स कितने होते हैं सिंगल एक माइक्रोस्पोर में? 2 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं रिपीटेडली. तो अगर आपको निकालने हो कि किसी भी सीड्स है 70 सीड्स हैं, तो 70 सीड्स में कितने माइटोटिक डिविजन्स हुए इन केस ऑफ मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट क्या है हमारा? pollen grain है. और pollen grain में कितने हुए? 2 माइटोटिक डिविजन्स. तो 2 माइटोटिक डिविजन्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोटिक डिविजन्स हुए थे. दैट मींस 70 into 2 विल बी 140 माइटोटिक डिविजन्स. और अगर आपको निकालना है 70 सीड्स में कितने मेयोटिक डिविजन्स हुए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक pollen mother cell जब ब्रेक होता है वो बनाता है 4 माइक्रोस्पोर्स. तो जितने भी नंबर ऑफ सीड्स गिवन हो उसे आप 4 से डिवाइड कर देना. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब मैं आगे जब हम अपना फीमेल गैमेटोफाइट भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको कंप्लीट एक न्यूमेरिकल के 2 वीडियोस रखूंगी जिसमें आपको कंप्लीट जो इनके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वो सारे क्वेश्चंस. थैंक यू. ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक यू.